जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदत्ता। आह, क्रिकेट के ज़रिए कई बार दर्शन होते हैं कल्चर के, सभ्यता के, संस्कृति के, लोगों के, और कई कई बार अध्यात्म और धर्म के भी। मुझे मौके बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं क्रिकेट के ज़रिए मंदिर को ढूंढूं, ईश्वर की पूजा अर्चना में जुड़ूं, लेकिन कई बार कहते हैं ना, ऊपर वाला खुद बोलता है कि भाई हमारे हिंदू धर्म में कहावत है कि भगवान अगर आपको खुद बोलते क्या ही। और ऐसा ही कुछ किस्सा मेरे साथ हुआ। जो पहला T20 मुकाबला था ब्रायन लारा स्टेडियम में, वो दोपहर में जल्दी ख़त्म हो गया और मुझे जाना था, अपने होटल में टैक्सी का वेट कर रहा था। तो अचानक मुझे किसी ने बताया था कि भाई एक हनुमान जी का एक टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है, भारत से बाहर इससे बड़ा टेम्पल नहीं है। तो मैंने अपने टैक्सी वाले से पूछा कि भाई वाकई में क्या, कितनी दूर पे ये टेम्पल है? तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे का है, 24 किलोमीटर ब्रायन लारा स्टेडियम से है। तो मैंने बोला चलो चला जाए। और जब मैं आया, यहाँ का नज़ारा देख के मैं हतप्रभ रह गया। आने के समय में रास्ते में भी जो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं कि वो लग रहा है कि आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर लेकिन इंडिया में हो। ट्रिनिडाड में वैसे भी इंडिया का कल्चर है, लेकिन खासकर यहाँ पर जिस तरह की शांति है, पूरा पीसफुल आपको लगेगा। इवन कई इंडिया के मंदिर में इस तरह की शांति आपको नहीं मिलती है। वाकई में बहुत सारे मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जगह मंदिरों में भीड़ रहती है, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। यहाँ पर आप वाकई में आते हैं तो लगेगा पुराने ज़माने के जैसे। मुझे लगता है हिंदुस्तान में जो मंदिर होते थे, क्वाइट, शांत, आप आके बैठिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए। तो मैंने भी हनुमान जी के आगे अपना सर झुकाया, उनका आशीर्वाद लिया। मेरी ये चौथी ट्रिप है त्रिनिडाद में। पहले मुझे पता भी नहीं था, पहली, दूसरी, तीसरी ट्रिप में, लेकिन चौथी ट्रिप में ना मुझे सिर्फ पता चला, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आया। और उम्मीद करता हूँ जितने लोग आप लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है या कभी भी आप ट्रिनिडाड में हो, तो यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ट्रिनिडाड के पोर्ट ऑफ स्पेन से विमल कुमार की ये रिपोर्ट।
सर अपना नाम बताएंगे और आप कैसे यहाँ पर कैसे आए इस मंदिर में? मेरा नाम अमित भटनागर है। मैं इस मंदिर में फॉर्चुनेटली आ गया हूँ आज। आज मैच देखने गए थे हम, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का। तो जब मैच देख रहे थे उसके बाद हमें लगा कि हनुमान जी के मंदिर होके आना चाहिए। तो इसलिए अब किसी दोस्त ने बताया था हमको कि ये काफ़ी अच्छा दत्तात्रेय टेम्पल है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्चुनेटली आ गए। तो इंडिया में तो आपने हनुमान जी के बहुत सारे टेम्पल्स देखे होंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आउटसाइड इंडिया ये सबसे बड़ा है, 84 फीट का है। तो कि जब आप यहाँ पर एंटर करें तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा है? मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ पे, मैंने ऑनलाइन देखा था इसके बारे में थोड़ा सा, तो कैरेबियन और अमेरिकन एरिया के अंदर दिस इज़ द टॉलेस्ट टेम्पल विच आई हैव रेड एज वेल। एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ इंडिया से सिमिलर मुझे एनवायरनमेंट लगा, ट्रिनिडाड की रोड, सड़कों का, विलेजेस का। एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द kind of houses and temples people have in their homes. It is quite good. और काफ़ी आपको इंडियन शॉप्स भी, ग्रॉसरीज भी मिलेंगी यहाँ पे। काफ़ी लोग वर्ष पूजा वगैरह करते हैं। लोगों के घर के बाहर भी टेंपल के हनुमान जी की कोटेशंस लगी हुई हैं। और मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी हनुमान जी का मंदिर है कनॉट प्लेस के अंदर, वो भी हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जाना होता था। फॉर्चुनेटली हम भगवान की इच्छा थी हनुमान जी की, तो इसलिए हम यहाँ पे आना हुआ आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ डू यू स्पेल योर नेम? My name is Ramesh Prag, Ramesh Pragg. So tell us about this temple, a magnificent temple. It is considered as the biggest outside India. This temple was actually inaugurated and conceived and was established by our Sadguru, His Holiness Sri 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 Ganapati Satchidananda Swamiji of Mysore, India. Swamiji first came to Trinidad in 1976 and has been coming to Trinidad regularly. I should say about 28 times since that first visit in 1976. Swamiji's mission in Trinidad started very small, with just a few people. There was no temple. I am told that I was not here in the early days, but this was paddy field. This area that we are on standing right now was paddy field, rice fields. And that very slowly and very over many years, and many devotees who may have passed on, slowly a small temple was built, foundation stone, a Kumbhabhishekam was done, and it went on in the 80s, 86, 88, 90, and then it took on a new look around 93, 95 coming up, when there was a open shed, and there was an area where murtis were consecrated. Kumbhabhishekam was done, and then coming down into the 90s, around 99 thereabouts, early 2000, Swamiji envisioned that we should have here in Trinidad a temple to honor our ancestors. Hanumanji, and the belief in Hanumanji was brought to our ancestors when they came here after 1845, going right up to 1917, when the ships brought the indentured immigrants, some of whom had a choice to go back to India. Some of them remained, some of them went back to India. They came mostly from the areas of Uttar Pradesh, state of Uttar Pradesh, and Bihar. And some of us. Which cities, if you recall? I don't know the cities, the villages specifically, but we have people who have been able to trace their lineage and their grandparents and great grandparents back to India. They spoke largely Hindi and Bhojpuri, and they considered, they held on very dearly to the Ramayana, and we had a group of pundits who came, and we maintained our language
up to about one generation ago. My mother, for example, who passed away in 2013, she spoke fluent Hindi. She could have read the Ramcharitamanas in original Devanagari script. And the education system, the media, and so on, Hindi was not promoted. So most of us lost, and also most importantly, more importantly for the younger generation back in the 70s and 80s, the influence of the Indian film industry. It helped a lot because you would hear that across Trinidad, many of the young people at that time, and even now to a lesser extent, used to sing these songs from the movies without any training, without any copies, without anything, just by listening. And so there were several small Indian bands, music bands and so on, that were formed and were flourished for many years. It has died down largely because Indian cinema is no more. Now it's Bollywood, which is a different thing altogether to what it was in the 60s and 70s when I was growing up, where we would flood the cinemas to see these movies, and out from those movies we learn a bit of Hindi as well. And so, coming back to the temple here, around year 2000, Swamiji envisioned that we should have this, and also on the recommendation of some of our former trustees and our president in particular. And around 2001, a group of sculptors came from South India, 20 of them, and they came to do the artwork, the artistry that you see on the temple. The local concrete work and the beer outline was done by local workmen, but they spent 2.5 years here, coming from South India, Tamil Nadu, and South Indian style, Dravidian style, as you see, and they worked on enhancing and beautifying the temple, and then they also looked after the construction of the Hanuman Murti. You know, the Hanuman Murti beer outline is concrete and steel, but what you see there was done by one main Stapati, who came from India and was come back from time to time. And then around 2014, 2016, the Rama Parivar temple on the left hand side and the Satyanarayana Swami temple. Satyanarayana Swami had puja, Satyanarayana Vrat Katha was always dear to our parents and grandparents. Every full moon Katha, as was known, on the full moon day, Purnima. So how many people generally come every day, and on the bigger occasion, how many people come? Okay, well, like on Tuesday, which was Purnima, there were over 125 people who sat there and participated in puja. And generally on like Ram Navami and other big festivals? Now there will be hundreds of people here. Hundreds of people. Yeah, on a Saturday evening for the Hanuman, on Saturday evening we do the Abhishekam to the Hanuman Murti. Okay. You would get like sometimes 50, 75 or 100. And then for the special occasions, the bigger occasions, Guru Purnima, Navaratri, Mahashivratri, we get big crowds. The hall is filled, hundreds of people, devotees come. And this construction took place, and then it was all in, you know, like one color. And around last year, December, we started a program which lasted 3 months, that you see in the change in the colors and the beautification, the upgrade as it is, to presently what you're seeing here now with the temple, and then the miniature Hanuman, the small Hanuman, and then big Hanuman, 85-foot Hanuman. That's exactly as you see it here. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot.